सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारे कॉलेज के मैथ्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो CSIR-NET और JRF एग्जाम के प्रिपरेशन पर बेस्ड है और ये मैथ्स स्टूडेंट के लिए है। तो ये हमारे PG के मैथ्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने कार्यशाला है वो। और इस उपलक्ष्य पे हम मुख्य अतिथि डॉक्टर संजीव आनंद साहू सर उपस्थित है। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर के वेलकम एड्रेस के लिए मैं हमारी प्रिंसिपल डॉक्टर सबनूर सिद्दीकी मैम को इनवाइट करती हूँ। प्लीज मैम। थैंक यू। चल, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। सभी को नमस्कार। शासकीय श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीमा में गणित विभाग द्वारा CSIR-NET JRF के महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने के बाद छात्र छात्राओं को उच्च एवं शोध की ओर प्रोत्साहित करने में ये कार्यशाला एक बेहतर प्रयास है, जिसमें छात्र छात्राओं का उचित मार्गदर्शन और अक्सर जाता है कि छात्राएं स्नातकोत्तर के पश्चात सही मार्गदर्शन के अभाव में सुविधाएं होते हुए भी सही निर्णय नहीं ले पाते, जिसके कारण छात्राओं में योग्यता होने बावजूद भी वे प्रयास में सफल नहीं हो पाते और पछताने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता। साथ ही छात्र छात्राएं इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं को कठिन समझकर अपना पूरा प्रयास नहीं दे पाते। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला का आज आयोजन किया जा रहा है, जिस CSIR-NET JRF महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। इन महत्वपूर्ण विस्तार से समझाने हेतु विभिन्न महाविद्यालयों तकनीकी संस्थानों से विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें डॉक्टर संजीव साहू, डॉक्टर मनोज सिंह, डॉक्टर सोनाली मंडल, डॉक्टर मनब, डॉक्टर कमलेश कुमार पंकज, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आती हूँ। हमारे महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों से संबंधित और इसमें सम्मिलित सभी छात्र छात्राएं एवं प्रतिनिधि इस कार्यशाला के माध्यम से विषय विशेषज्ञों के ज्ञान से लाभित होकर उच्च शिक्षा एवं शोध की ओर आयाम स्थापित करें और एवं अपने अपने महाविद्यालय का नाम बनाएं। कार्यशाला की आयोजक समिति गणित विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर निधि देवांगन, के शर्मा सर और भार्गवी मैडम का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ इसमें जुड़े सभी प्रतिभागियों सहभागियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में हमारे महाविद्यालय से अन्य संकायों में भी इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी हेतु विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे हमारे छात्र लाभान्वित होंगे। आज के सभी विद्वान गण का मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा आमंत्रण से ही सहर्ष से स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय दिया। पुनः आपके आभार, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम। आगे मैं हमारे आज वर्कशॉप के थीम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैथ्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर निधि देवांगन मैम को इनवाइट करती हूँ। Thank you. Good morning to all of you. Respected and capital. Respect Dr. and other speakers, colleagues. A warm welcome to all of you in the inaugural session of this 2 days workshop on topics of mathematical sciences
for CSIR-NET JRF exam is by Department of Mathematics. Basically, CSIR-NET stands for Council of Scientific and Industrial Research, a national eligibility test. It is a national level exam conducted by NTA, that is National Testing Agency, for the candidates who wants to choose junior research fellowship lectureship as their career. This exam is mainly focused for qualifying one as an individual eligible for lectureship or for research with either LS or JRF qualification respectively. CSIR UGC NET JRF is one of the toughest and prestigious exam in India. An important exam to build a career in teaching and research sector. CSIR NET is organized twice in a year. Basically, it is organized in June and December to select the talented researchers and lecturers who put their knowledge and skill to the education. Here we see that the students always give their best in the exam, but they can't qualify the exam due to the lack of proper guidance. They only focus on completing the syllabus, but there is a need to understand the concept, not just the complete the syllabus. So completing or just reading the whole syllabus is not going to help. CSIR NET JRF exam only requires hard work, but also need proper guidance and patience. Through this workshop, we are trying to provide a platform to understand the concept and enhance the skill, make you in touch with experienced teacher who have already qualified the exam. In this workshop, we covered the important topics: partial differential equation, ordinary differential equation, real and complex analysis, and linear algebra, which will help in qualifying the exam. In this workshop, almost total 90 participants have registered from different colleges and University of Chhattisgarh. In this 2 days of workshop, total lecture organized. On first day, after the inaugural session, keynote address will be delivered by Dr. Sanjeev Anand Sahu, which is also our chief guest. He is Associate Professor of Department of Mathematics and Computing, IIT Dhanbad. After that, first lecture of this workshop will be delivered by Dr. Sonali Mandal, University, Amravati. And this side be profitable.
फ्रूटफुल नहीं वाला है। जो सीखने वाली ये एक रास्ता बनाए, और जिस बात की उन्हें बहुत अधिकायर में जरूरत है हम उनको प्रोवाइड कराएं। सो सी इन अ सिंपल ऑनलाइन आपके इस प्रोग्राम के कन्वीनर ने आप सभी स्टूडेंट्स को इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के एक्सपर्ट्स या स्पीकर्स या जो खुद भी नेट क्वालिफाइड हैं, इनफैक्ट मोर देन 1 टाइम क्वालिफाइड हैं, आप लोगों को कनेक्ट कर दिया। एक और टाइम इफ सी माय टॉक ऑफ इयर्स बैक, तो शायद हम लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं थे कि हमें ऐसे टीचर्स नहीं मिले या ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे कोई आके हमें ये बता पाता कि एनईटी एग्जाम एक्चुअली है क्या, इसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसके सिलेबस क्या है, ये कैसे क्रैक करना है। सो दे आर मेकिंग इट इजियर। आप इस बात को समझ पाए या ना समझ पाए ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन they are doing their duty in a very very right manner. It makes me proud actually. So thank you, Nidhi. I was talking to the convener of this particular workshop, और उन्होंने बताया कि इस particular workshop में number of candidates have registered, that is more than 80 or 85, with the wide geographical coverage of the state of Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स लोगों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। इससे एक बात तो निश्चित है कि ऐसे किसी वर्कशॉप या ऐसे किसी इवेंट की बहुत आवश्यकता थी। इट वाज देयर वाज अ ग्रेट नीड ऑफ सच काइंड ऑफ इवेंट्स, और इसी के सिमिलर वर्कशॉप भी आगे फ्यूचर में ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए। क्या होता है कि मैं आप कुछ ऐसी बातें बताऊं जो हम लोगों ने अपने किया है, हो सकता है शायद आप लोग ना फेस कर पाए, ना करें तो ज्यादा अच्छा है। कि if we talk the scenario mathematics and research in mathematics in the state of छत्तीसगढ़, तो उसके दो क्लियर कट हब्स हैं। नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में अगर हम बांटते तो एक बिलासपुर यूनिवर्सिटी और एक रायपुर यूनिवर्सिटी, तो क्लियर कट रायपुर यूनिवर्सिटी दैट इज पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में ऐसे मेंटर्स हैं या ऐसे लोगों ने वहाँ पे काम किया है जो कंपैरेटिवली इस एग्जाम के बारे में या आउट ऑफ स्टेट मैथमेटिक्स रिसर्च के सिनारियो के बारे में ज़्यादा अवेयर कंपैरेटिवली इन कंपेयर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिलासपुर। तो अब जरूरत यह है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम बीइंग ए स्टूडेंट ऐसे कॉलेजेस में पढ़ते रहते हैं, लाइक एज आई कम फ्रॉम ऑटोनोमस साइंस कॉलेज ऑफ बिलासपुर, ऐसे ही देयर आर नंबर ऑफ कॉलेजेस व्हिच आर एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिलासपुर एंड रायपुर। तो हमको बाहर के सिनारियो का एक्चुअली आइडिया नहीं होता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्चुअली क्या चल रहा है, या हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो टॉपिक्स एनईटी के लिए, नेट एग्जाम के लिए, पीएचडी एंट्रेंस के लिए, पीएचडी इंटरव्यू के लिए, या सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए, या गेट के लिए, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है, कितना फ्रूटफुल है, हम सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, या हम सही टॉपिक्स को कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे एक सरप्राइजिंगली अगर आप लोगों को नहीं पता होगा या आप लोगों ने नहीं एक्सप्लोर किया होगा, दोस हु आर द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस, there are topics like linear algebra, complex analysis,
and differential equations. So at my time there was no such paper precisely for differential equation in our graduation classes. अभी हमको लगता है कि अच्छा होता कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पूरा पेपर हमारे पास हमारे करिकुलम में रहता था कि हम उसके ओडी और पीडी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते। तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको ना केवल नेट एग्जाम के लिए बल्कि पोस्ट नेट जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज और आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिनेरियोज आएंगे उसमें भी हेल्प करेंगे। सो दिस इज आई वुड से वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बार सही तरीके से और ईमानदारी से नेट का प्रिपरेशन करते हैं तो जो प्रिपरेशन आप नेट एग्जाम के लिए जिन टॉपिक्स का आपने प्रिपरेशन किया है वो प्रिपरेशन केवल नेट के लिए नहीं बल्कि उसके आगे आने वाले हर एक नेक्स्ट पॉइंट में सक्सेसिव पॉइंट्स में वो नॉलेज और वो प्रिपरेशन आपको काम आने वाला है। आप चाहें तो यूपीएससी के एग्जाम भी मैथमेटिक्स से प्रिपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ नेट। नेट का प्रिपरेशन अपने आप में एक इतना बड़ा अम्ब्रेला है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस ऑलरेडी आ जाते हैं। So this is one benefit. I will be talking on more benefits of cracking the exam net, and particularly the planning strategy of how to appear for the net exam and post net scenarios. अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो ये नेट जरूरी क्यों है और इस नेट के होने के क्या क्या फायदे हैं। जैसे एक जो इंस्टेंट फायदा है वो मैं आपको बता दूं। अब there are number of students. Whenever I visit छत्तीसगढ़ तो मैं हमेशा अपने कॉलेज जाने का ट्राई करता हूँ और मुझे या लास्ट टाइम आई विजिटेड यूनिवर्सिटी रायपुर ऑल्सो। जब मैं यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में विजिट करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे खबर ऐसे मिलते हैं कि इस साल 5 और ज़्यादा स्टूडेंट या 10 और ज़्यादा स्टूडेंट नेट क्वालिफाई कर लिया and they are pursuing their PhD in BHU, in IIT Roorkee, in some NITs और सम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो कि बहुत ही संतोष देने वाली खबर है। मैं चाहता हूं कि ये जो नंबर्स हैं ये बाय द टाइम इंक्रीज हों और इसके लिए ज़रूरी है कि हमें इस एग्ज़ाम का पूरा जो डिटेल्ड है प्रिपरेशन स्टाइल स्ट्रेटजीज एंड एवरीथिंग कंटेंट सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अभी जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को अटेंड कर पा रहे हैं, जिन लोगों ने आपके स्टेट से ही, आपके कॉलेज से ही या आपके आसपास के कॉलेज से ही बीते कुछ सालों में नेट एग्जाम क्लियर करके आईआईटीज में जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, एनआईटीज में, अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, उन लोगों ने आपके भ्रम को तोड़ दिया है। अब आपके पास ऐसा कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है या हमारे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं जिससे कि हम पढ़ सकें। यू आर द पीपल living in the era of 21st century, in the year of 2022, जबकि आपके पास YouTube में सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। You have number of apps for study। मैं यहाँ अपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर्स में भी बताता हूँ कि कैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पढ़ाई की हरद्वार जैसे ऐप ला करके कोरोना में भी स्टडी को बनाए रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही और एग्जाम्पल्स आप सेट करें। अगर आप मॉडर्न एज में ये बहाना बनाएंगे कि हमारे पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं हैं या लाइब्रेरी नहीं है या अच्छे टीचर्स नहीं हैं या और भी कोई बात नहीं है, नेट की अच्छी कोचिंग नहीं है छत्तीसगढ़ में, तो वास्तव में आप अपने आप को और अपने पेरेंट्स के साथ छल कर रहे हैं। ये सच नहीं है, भले इस बात को आप समझ लें। इस बातों को बहुत लोगों ने मिथ साबित कर दिया है। तो आपके पास एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। तो फिर कैसे हो कि हम तो भाई कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या जैम क्रैक करके आईआईटीज से एमएससी नहीं परस्यू कर रहे हैं, तो हम कैसे नेट प्रिपेयर कर लें या हम क्यों नेट प्रिपेयर करें या हम कैसे आईआईटीज में रिसर्च करें? क्वेश्चन ये है। तो किसी भी स्टेट के या कहीं से भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी स्टेट के सबसे अंतिम डिग्री कॉलेज से आईआईटी के बीच का जो गैप है, उसी के बीच का जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिज है वो है नेट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल नेट जेआरएफ क्लियर करना है। आप चाहे कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, सो यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीएचडी इन ऑल द आईआईटीज, इन ऑल द एनआईटीज, इन ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। और जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम इन सारे इंस्टीट्यूशंस, आइजर्स या और भी, देयर आर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस फॉर मैथमेटिक्स रिसर्च लाइक इन भुवनेश्वर,
सेंटर फॉर मैथमेटिक्स, और भी ऐसे बहुत सारे निकल जाएंगे जब आप खोजेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस की टोटल संख्या जो है 50, 60 या 70 से भी ज्यादा है। 23, 25 का IITs ही है, वैसे ही 20 या उसके आसपास NITs होंगे। नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। सो एवरीथिंग इज बिफोर यू, द ओनली थिंग इज नीडेड dedicated preparation for this particular exam with its proper strategy and to be capable। ये नेट एग्जाम क्वालिफाई करना आपको अपने कैरियर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने आप के लिए सक्षम बनाने की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग सीढ़ी है। बस यही आप समझिए। सो आई वांट टू सी मेनी ऑफ यू इन फ्यूचर doing the similar work as Dr. Nidhi, Dr. Bhargavi are doing nowadays। कि आप खुद भी कैपेबल बनिए और आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, अपने फैमिली में अपने छोटे बच्चों को या आगे आने वाले स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाएं, make ways for them। This is how we should do, being a civilized, a responsible person of our country India, and in particular of our institution। Everyone pursue their job, everyone earn a sufficient amount of money as per their job, but there is something we need to always give back to the society जहाँ पे हम रहते हैं। there must be some way that we can give back some of our capability up to our whatever we are, however we are capable। तो हम अपने आने वाले समाज को कैसे रास्ता दिखाते हैं या उनका कैसे हेल्प करते हैं, ये ज्यादा जरूरी बात है। So with this I wish all the luck to Dr. Nidhi, convener of this particular workshop, and मैडम सिद्दीकी को बहुत बहुत धन्यवाद उनके शानदार स्वागत भाषण के लिए। मैं बहुत अभिभूत हूँ, और सारे स्पीकर्स की तरफ से और अपने व्यक्तिगत तौर पे भी मैं मैडम सिद्दीकी का, आपके कॉलेज का, मैडम चारू वर्मा का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। आगे मैं सेशन को आगे बढ़ाते हुए वोट ऑफ थैंक्स के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर जी नाग भार्गवी मैम को इनवाइट करती हूँ। Hello. यस मैम। Thank you, Charu. A very good morning to one and all. Respected Principal Dr. Siddiqui Madam, Honorable Chief Guest Sanjeev Anand Sahu ji, Associate Professor, Department of Mathematics and Computing, IIT ISM Dhanbad. Resource person of this workshop, Dr. Sonali Mandal from SRM University. The convener of this workshop, Dr. Nidhi, my colleague Dr. Nidhi, and other colleagues from other departments, dear students from different colleges of Chhattisgarh state and ours also. I welcome you all, as well as the big responsibility of giving vote of thanks. This inaugural session is given to me by Dr. Nidhi. I definitely want to take this opportunity to thank one and all. In this respect, first of all, my thanks is to our chief guest, Dr. Sahu from IIT ISM Dhanbad, who is the driving force behind this workshop. Thank you so much, sir, for motivating us. You always motivate us, and you always show directions to Dr. Nidhi and me whenever we find your support, and you always be there with us. So thanks to you. I extend my gratitude to our principal, Dr. Siddiqui Madam, for encouraging us to organize this kind of events so that our students, maximum of our students, may get benefited. It is also my pleasure to thank and to pay sincere gratitude to all the resource persons who will be joining this workshop during these 2 days to guide our students. I also thank all the participants joining from different colleges and universities from all the corners of state. I hope these 2 days will be very useful to you all, and many of your doubts will be cleared by our resource persons.
and definitely this workshop will give dimensions to your thoughts and your preparation for CSIR-NET in a well-defined manner. Finally, my thanks is to Dr. Nidhi, who is head of Department of Mathematics, for planning this workshop and making this in such a beautiful manner. I hope you all will have a nice time and great time during these 2 days, and our resource persons will definitely have a good interaction with our students also with these words. Thank you all. थैंक यू मैम। आगे मैं डॉक्टर निधि देवांगन मैम को ये सेशन हैंड ओवर करती हूँ। Thank you, Charu. Now it's time for the keynote address. Sir Sanjeev sir, start करें। Okay. Okay, sir. Sir, with a brief introduction, I hand over the session to Sanjeev sir. So now it's an honor for me to introduce our keynote speaker. कहते हैं inspiration is very important, and so next we will listen our keynote speaker, Professor Sanjeev Anand Sahu, for their motivational guidance and the strategical plan to crack the CSIR-NET JRF exam. Dr. Sanjeev Anand Sahu is Associate Professor in the Department of Mathematics and Computing, IIT ISM Dhanbad. He has earned his PhD in Applied Mathematics from IIT ISM Dhanbad. Professor Sahu has earned expertise in the field of elastodynamics in general and in wave transference phenomena in piezoelectric composite in particular. Besides this, his present research interest includes use of machine learning algorithms for early earthquake warning systems. More than 15 scholars have been awarded PhD degree in his supervision. Professor Sahu is author of more than 110 research articles published in peer-reviewed journals of international repute. Professor Sanjeev Anand Sahu has been awarded as Young Scientist by International Academy. Also, the Young Researcher Award and Best Faculty Award has been bestowed on him. Professor Sahu has served as editorial board member for an international journal in the field of geomathematics. So with this brief introduction, I request Professor Sahu sir for keynote address. So sir, please. Okay. Thank you, Dr. Nidhi Devangan, convener of this workshop, for kind words on my introduction. But I would say Dr. Nidhi has said several things about me, which may be the academic identity, which sets academic identity for me before you. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो उन्होंने आपको नहीं बताई, which would be the true identity of me, that I am the proud supervisor of star JRFs of this particular institute, IIT ISM Dhanbad, like Nidhi, Sonali, Dr. Kamlesh, Dr. Manoj, and other speakers of this particular event, and more to them. So this stands me more proudly among other researchers and other instructors of this particular subject of mathematics in the country, India, and abroad. With this, let us talk as I'm given to the responsibility of delivering keynote address. So in this short time, maybe of 20 or 25 minutes, I'll be talking on strategy of preparing this NET exam in particular. जो स्टूडेंट्स इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, बिफोर स्टार्टिंग माय टॉक मैं पहले उनको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जो सोच रहे हैं कि हम फ्यूचर में नेट एग्जाम अपीयर होना चाहते हैं, मे बी दिस ईयर एज इट हैपेंस ट्वाइस इन a year, as Nidhi told in her introduction part, in the month of June and in the month of December.
तो जो स्टूडेंट इस बार आने वाले दिसंबर में या नेक्स्ट ईयर के जून में कभी भी नेट एग्जाम में प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो वो सभी अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि हमारे पास जिस दिन ये नेट एग्जाम होने वाला है, जिस संडे को होगा दिसंबर या फिर जून का, उसके उस 3 घंटे की प्रॉपर प्लानिंग है कि नहीं, हमारे पास एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है कि नहीं स्टिक, जिसपे हम उस 3 घंटे में स्टिक रहेंगे। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो आई वुड सजेस्ट नॉट टू बी अपीयर्ड इन द एग्जाम। आपके पास हमेशा इस सवाल का जवाब अफर्मेटिव होना चाहिए, that yes we have the particular planning and strategy to appear in upcoming net exam। तो पहले बात तो ये फिक्स करें and what this strategy should be। तो ये स्ट्रेटजी होगा कैसे, जब आप नेट के स्ट्रक्चर को जानेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके सिलेबस क्या है and what is the mark division in different units in different topics of mathematics। This will help you to plan your own strategy। अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को, इसके कंटेंट को और इसके टाइम कंस्ट्रेंट को समझ पाएं। सो फॉर दिस लेट अस हैव सम नंबर ऑफ स्लाइड्स। These slides are visible to you। सबसे पहले आप इस नेट एग्जाम के पेपर के बारे में समझ लें कि you will have one paper for net exam which carries 200 marks in the time frame of 3 years। एक बार होगा जिसमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ये उसके 3 सेक्शंस हैं। पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड है और पार्ट बी एंड पार्ट सी जो है वो सब्जेक्टिव है। यानी पार्ट बी और पार्ट सी से जो क्वेश्चंस होंगे वो मैथमेटिक्स या गिवन सिलेबस पर बेस्ड होंगे। पार्ट ए में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 20 होंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन करने होंगे। पार्ट बी में आपके पास शायद 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन करने होंगे। और पार्ट सी में आपके पास 60 क्वेश्चन होंगे, जहां से आपको 20 क्वेश्चन व 3rd क्वेश्चन करने होंगे। So there are total 120 questions in your paper and you are supposed to do not more than half of this। यानी कि 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और लास्ट में 20 क्वेश्चन, यानी 60 क्वेश्चन। So out of 120, so first thing you see how many choices you have। So you have roughly 50% chances, 50% choices। लेकिन जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है या जो सिलेक्शन स्टैटिस्टिक्स है, अगर हम लास्ट फ्यू इयर्स के स्टैटिस्टिक्स देखें कि हमको सिलेक्शन कितने नंबरों पे मिलेगा या कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पे मिलेगा, तो इवन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व टू क्रैक दिस एग्जाम इज रफली 1/3 ऑफ दिस 120। यानी 35 से 40 क्वेश्चन, इवन इफ यू कुड सॉल्व 30 to 35 क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन आप किस पार्ट से कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। सो रफली solving 35 number of question or it makes 40 number of question is good number of question to crack this exam। तो कितने नंबर हमको सॉल्व करने हैं, ये चीजें किन 2 पैरामीटर पे डिपेंड करेंगी। उसके लिए 2 क्लियर कट पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर है कि हम नेट एग्जाम के लिए हमारा टारगेट क्या है। नेट एग्जाम में जो क्वालिफिकेशन है, दैट इज आफ्टर क्रैकिंग द नेट एग्जाम, उसकी 2 कैटेगरीज हैं, नेट JRF एंड नेट LS, दैट इज एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप। नेट JRF आर रफली टॉप 150 or 160, the number I don't exactly know, but roughly 150 number of students roughly get JRF, those who take this net exam with high scores। और उनके बाद जो उनसे कम स्कोर वाले स्टूडेंट्स हैं, they are eligible, they are qualified for LS। So what do we mean by qualifying net with JRF and net with LS? If you are in that 150 students, those who are eligible for net JRF, they can pursue their PhD in IITs, NITs, central universities, ISRs और ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूट जिसमें PhD के एंट्रेंस के लिए नेट एग्जाम कंपलसरी है। But in most of the institutions, यानी कि if I talk of IITs,
and NITs. So NET JRF is the strongest tool to be eligible to apply for PhD in these institutions, even in central universities, maybe, if they do not conduct their own written test. तो JRF होना आपको एलिजिबल बनाता है कि विद फेलोशिप आप किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंपॉर्टेंस या नेशनल इंपॉर्टेंस में PhD परस्यू कर सकते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशन आपको फेलोशिप नहीं भी देता है तो CSIR, which is the Council of Scientific Research, वो आपको, क्योंकि आपने JRF क्लियर किया है, वो आपको आपके PhD परस्यू करने के लिए सर्टेन पीरियड के लिए फेलोशिप प्रोवाइड कराएगी। This is the benefit of having NET with JRF. Having NET with LS, अगर आप उन टॉप 150 या 160 या जो भी कट ऑफ सेट होगा जिनको JRF मिलेगा उसमें नहीं आते हैं, and if you simply qualify this NET with LS lecturership, so you become eligible to apply for the entrance test like for the assistant professor in degree colleges of स्टेट यूनिवर्सिटीज। बहुत सारे ज़्यादातर स्टेट्स में उस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, मे बी डायरेक्टली इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं फॉर रिक्रूटमेंट इन डिग्री कॉलेजेस एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो उन रिक्रूटमेंट की जो एलिजिबिलिटी है वो है नेट एटलीस्ट विथ LS कि आप लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल हैं। ये पूरा एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है। So this NET exam makes you eligible for two things: to pursue PhD with fellowship in institution of national importance like IITs, NITs, ISRs and other maybe triple ITs और भी दूसरे institutions हो सकते हैं, and it makes you eligible for applying in recruitment drive of assistant professors in colleges. If you do not set can make you eligible to apply for assistant degree colleges, but in your state. So this is the benefit. दूसरी बात, there are certain reservations also category wise कि unreserved candidates के लिए क्या कट ऑफ सेट है, OBCs and ST and SC candidates के लिए क्या क्या कट ऑफ सेट्स हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। So you first learn all of these things seriously so that you can plan your own strategy. आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका टारगेट क्या है, और आप किस प्लानिंग के साथ नेट एग्जाम में अपीयर होंगे. This all makes your success actually. So let us talk on these things one by one. Let us come to the strategical point. As there are three parts, part A, part B और part C. तो इसमें से जो पहला पार्ट है ये जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है, जिसमें मैथमेटिक्स के जो जनरल क्वेश्चंस वी कैन से, जो कि अप टू द क्लास 10th और 12th तक के इंफॉर्मेशन पर ही बेस्ड है. This do not needs rigorous study of the syllabus prescribed for NET, but the questions like number theory, some examples are given जो कि ज़्यादातर पिछले 4 साल 5 साल या 8 सालों में पूछे गए हैं. There could be problems based on statements. ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे कि all the balls are fishes and all the fishes are these, तो ये बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं. ब्लॉक डायग्राम से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, पाई चार्ट से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज्योमेट्री से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, एरिया और उनके वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, रेडियस डायमीटर ऑफ स्फीयर्स एंड सर्कल्स से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इफ यू आर गिवन 2 concentric circles और 2 spheres which are in this particular ratio, तो अगर एक का रेडियस इतना है तो दूसरे स्फीयर का रेडियस कितना होगा, काइंड ऑफ. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो up to your knowledge mathematics based on class 11th and 12th, this could be covered. There will be 20 questions in this particular part, and you are supposed to solve not more than 15 questions. So 15 questions are to be done, and you will be having 20 questions.
each of the questions will carry 2 marks, and there will be negative marking for each wrong answer, that is of half mark, that is 0.5 marks will be deducted for each wrong answer. तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है. Though this part comes very first, यानी इसको हम पार्ट 1 बोल सकते हैं या पार्ट ए बोल सकते हैं, लेकिन जब हम स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो whenever you appear for NET exam, इस पार्ट का जो प्रेफरेंस है वो सबसे लास्ट में आता है. We should not waste or prime time on solving the questions in this particular part. इसके 2 ड्रॉबैक्स हैं. एक तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं. दूसरी बात, ये वो क्वेश्चंस नहीं कवर कर रहे हैं जो हमने सिलेबस में पढ़ा है, लाइक इफ रियल एनालिसिस, नंबर लीनियर अलजेब्रा या जो भी टॉपिक्स हैं, वहां से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बल्कि जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ रहे हैं. So do not waste much of your time in this particular part, but we shall go for the next part. So let us come to the next part, that is part B. पार्ट बी में टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चंस हमको करने होंगे, नॉट मोर देन 25 क्वेश्चंस. एंड इन दिस पार्ट नाउ द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस विल बी स्टार्टेड. हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स होंगे और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर 0.75 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द क्वेश्चंस विल बी ऑफ MCQ. So there will be one correct answer for each question. So we can plan. I will be talking of a strategy how one student can plan to solve the questions of these 3 parts. First, हम तीनों पार्ट के बारे में पहले समझ लेते हैं कि तीनों पार्ट्स के कंटेंट क्या क्या हैं और इनकी स्कीम क्या क्या है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग है. फिर इसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाएं. तो पार्ट बी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. MCQ questions are there. It means there will be only one correct answer. This is not MSQ, this is MCQ. There will be 3 marks for each questions. You are required to solve not more than 25 questions. And the questions will be based on entire syllabus of this particular paper, mathematical science. जिस syllabus के बारे में आगे मैं बात करूँगा. ठीक है? तो ये हुआ पार्ट बी के बारे में. पार्ट सी will have 60 questions. You get maximum options in this particular part, and you have to solve 20 number of questions in this particular part. केवल 20 क्वेश्चन करने हैं 60 में से, that is 1/3 roughly नहीं बल्कि exactly. Each of the questions will roughly carry 5 marks. तो अब आप समझ जाइए कि इस पार्ट सी के जो क्वेश्चंस होंगे वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे और कितने लाइक वन क्वेश्चन अगर आप इस पार्ट से कर लेते हैं सही तो वो पार्ट ए के 2 से ज्यादा क्वेश्चन के बराबर है. So this tells you the weightage of marks, tells you importance of this particular section, that is part C. More emphasis should be there on this particular part C. One additional benefit of targeting more questions for this particular section is there is no negative marking in this part C. So negative marking is only in part 1 and part 2, that is part A and part B. But the tricky part of this particular section C is there are MSQ, multiple selections हो सकते हैं. It means there could be more than one answer which are correct, और ऐसा ही होता है ज़्यादातर. So what it needs? It needs detailed and exact understanding of the question. अगर आप क्वेश्चन को उसके डेप्थ तक समझ पाएंगे और वो क्वेश्चन जिस मीन से प्रिपेयर किया गया है, जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया है, अगर उस ऑब्जेक्टिव को आप समझ पाएंगे तो आप इस पार्ट को आसानी से कर सकते हैं. बट इट नीड्स मच अटेंशन, इट नीड्स मोर टाइम और इसमें मार्क्स भी ज़्यादा हैं. सो यू शुड मेक योर सेल्फ रेडी for this particular part C. So half of the success of cracking NET exam lies on part C. In fact, more than half I would say.
सो व्हाट दिस पार्ट एंड इट्स पैटर्न सजेस्ट यू कि जब भी आप कभी नेट के लिए प्रिपेयर करें तो केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस लगा करके प्रिपेयर नहीं करें, बल्कि उन टॉपिक्स को इतने डेप्थ तक समझें कि अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे आता है, सपोज यू हैव अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड यू हैव टू द फंक्शन कैन बी सेम टाइम differentiable at a point, the function will be continuous at that point, or there could be different pairs. Suppose we have a function and we have to check the differentiability and continuity, existence of first order derivatives. So several questions can be associated with the same function कि उसी फंक्शन के लिए सेम पॉइंट पे हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चेक करना हो सकता है, उसी क्वेश्चन के लिए किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना हो सकता है, उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी भी चेक करना हो सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट दैट पॉइंट. So there could be more than one correct answer in the same question. Okay. The most important fact about this particular part is because of marks in each question as it is 4.75, this part becomes the most scoring part. तो आपको जो कट ऑफ पता रहेगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितना गया, which roughly turns around 120 or 120 प्लस समथिंग कुछ होता होगा, इसी के आसपास होगा. अगर आप 120 मार्क्स इफ यू आर इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी, so if you make sure to score more than 120 marks, you are safe and you can expect to have JRF. वैसे डिफरेंट कैटेगरीज के लिए भी मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स है which we'll discuss later on. अगर आप LS क्लियर करना चाहते हैं या आपका टारगेट LS है जो कि नहीं होना चाहिए, तो you can expect having LS around 100 marks, 100 to 104 marks. तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी फिक्स करनी है कि हम किस क्वेश्चन से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन तो जरूर करेंगे. So I hope with these 3 slides, part A, part B and part C, इन तीनों पार्ट का जो मार्किंग स्कीम है और क्वेश्चन के नंबर्स हैं और कितने क्वेश्चंस हमको किए जाने हैं, निगेटिव मार्किंग स्कीम है और इम्पोर्टेंस है, ये बात आपको समझ में आती होगी. So first you make this thing clear with you. You can read out this slide. As I was saying, what do we mean by JRF and LS? The same thing is written here. See, this slide gives you cut-off percentage for different categories. You can also have this percentage in terms of marks कि वो नंबर के टर्म में अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए कितने कितने आ रहे हैं. So this is widely available in internet. You can find in any source of CSIR-NET. तो सब्जेक्ट वाइज होता है. मैथमेटिकल साइंस के लिए आप देख लीजिए कि 120 गया है, 121 गया है, SC कैटेगरी के लिए कितना गया है, ST कैटेगरी के लिए कितना गया है, OBCs के लिए कितना गया है, PWD कैटेगरीज के लिए कितना गया है. So this number tells you in percentage कि if you can score around 54 or 55% of total marks under unreserved category, you are safe for JRF. And if you can score 50% marks, you are safe for LS. You are certainly getting LS under unreserved category. So see, this could be the highest कट ऑफ. बाकी के जो कैटेगरीज हैं उसमें तो इससे कम ही कट ऑफ आएंगे. तो आप ये मान के चलिए कि हमको रफली 100 मार्क्स तो कवर करने ही है अगर हम नेट क्लियर करना चाहते हैं. अगर 100 से ज्यादा आया, 120 से ज्यादा है, तो आपको JRF मिल सकता है. बट यू सेट योर गोल एटलीस्ट टू सॉल्व 50% ऑफ क्वेश्चंस. इसीलिए मैंने कहा कि हालांकि हमको 60 क्वेश्चंस 120 में से करना है, लेकिन एक्चुअली किस किस सेक्शन से कितना कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है. बट इफ यू कैन सॉल्व 35 to 40 क्वेश्चंस, इट मेक्स यू सेफ on the safer side to qualify net with JRF. So this thing should be there in your mind. आपको ये बात पता होनी चाहिए. और आप लास्ट 5 ईयर का सर्वे कर लीजिए. दिस इज योर टास्क. जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो अपने लिए एक टास्क लिख ले कि हमको लास्ट 5 ईयर के या 3 ईयर के कट ऑफ्स पता होने चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग,
उनके पास लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको 20 क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में फेस करने हैं तो कम से कम आप 1200 से ज्यादा क्वेश्चन हाथ से लगा के जाएंगे एग्जाम में, 10 टाइम भी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे। प्रैक्टिस तो आप उससे भी ज्यादा करना, मिनिमम आप टारगेट कर लीजिए कि 1500 से 1600 क्वेश्चन आप प्रिपरेशन के 6 महीने के पीरियड में, क्योंकि हर एक 6 मंथ में एग्जाम होना है, सो यू सेट योर टाइम टू बी 6 मंथ, so 1500 1600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एंड एमएसक्यू क्वेश्चंस हम अपने हाथ से सॉल्व करके जाएंगे, तब हम नेट एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। And it needs to solve roughly 50% of questions, 50% to get 50% of marks. This is also true. So all the strategy lies in this between these two things, that what is the cutoff marks and what are the topics which are actually important, which we'll be talking later. Now let us talk of strategy of solving the question paper. Once you are in the examination hall, there is question before you, question paper 120 क्वेश्चन आपके सामने है, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग क्वेश्चन। तो मैं दो स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूंगा। These slides, let me thank my students that the slides are prepared on their personal experience, based on their personal experience, and also the lectures which will be delivered during this particular workshop, वो भी ऐसे स्पीकर्स लाइक डॉक्टर कमलेश पंकज हैं, डॉक्टर मनोज सिंह हैं, डॉक्टर सोनाली मंडल हैं, डॉक्टर मानक कुंडू हैं, ये सब ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने खुद भी नेट एग्जाम मोर देन वन टाइम क्वालिफाई किया हुआ है, और आई वुड से नॉट ओनली एक्सपर्ट्स ऑफ नेट बट दे कुड बी रादर कॉल्ड टू बी कोच फॉर नेट एग्जाम। So you will be definitely benefited by their personal experience. और ये जो वर्कशॉप है ये कोई टॉपिक्स टीच करने के लिए नहीं है। इनफैक्ट वी कैन नॉट टीच सर्टेन टॉपिक्स से लिनियर अलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी या रियल एनालिसिस की मैं कोई एक यूनिट पढ़ा दूं, ये पॉसिबल नहीं है 1 घंटे और 2 घंटे के लेक्चर में, बल्कि आप उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कुछ लर्न कीजिए कि हम एग्जाम कैसे क्रैक करेंगे। सो लेट मी टॉक ऑफ 2 स्ट्रेटजीज इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। हम अगर अपना टाइम डिवाइड करें तो हम सबसे पहले पार्ट बी से स्टार्ट, एक स्ट्रेटजी तो ये है कि हम पार्ट बी से स्टार्ट करें एंड वी सेट टू गिव 1 hour टू दिस पर्टिकुलर पार्ट एज एमसीक्यू क्वेश्चंस आर देयर, और हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 15 प्लस क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, रफली 17 to 18 क्वेश्चंस हम पार्ट बी से कर रहे हैं टू बी श्योर। तो हमने पहला 1 घंटा जो हमारा फ्रेश फर्स्ट आवर है वो हमने पार्ट बी को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर करेक्ट होगा। सो इफ यू आर श्योर फॉर द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस वी कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये स्ट्रेटजी 1, फर्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करें। देन द नेक्स्ट 1.5 hour वी कीप दिस पार्ट, दिस टाइम रिजर्व फॉर पार्ट सी व्हिच इज द स्कोरिंग पार्ट, और इस पार्ट में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर जेआरएफ क्लियर करने के लिए जो टारगेट है वो 11 से 12 क्वेश्चन है। इफ you can make sure that you are solving 11 to 12 questions in this particular section, you are safe for JRF। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 10 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने का होना चाहिए। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले 1 घंटे में आपने पार्ट बी सॉल्व किया, नेक्स्ट 1.5 hour में आपने पार्ट सी कवर किया, 1.5 घंटे में, माने हम यहाँ पे अभी टाइम को फिक्स कर रहे हैं ना, हम 1 घंटा ही देंगे, 1 घंटे में हम पार्ट बी जितना सॉल्व कर सकते हैं कर लें, फिर नेक्स्ट 1.5 hour हम पार्ट सी को देंगे, इसमें जितना कर सकते हैं उतना कर लें, और लास्ट का जो 30 मिनट है वो हम पार्ट ए को यानी कि जनरल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस को देंगे। दिस इज वन स्ट्रेटजी। देयर कुड बी अनदर स्ट्रेटजी कि 120 क्वेश्चंस हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट का अपना पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। कभी कभी हम क्वेश्चन जब एक बार पढ़ते हैं तो हमको क्वेश्चन इंस्टेंटली नहीं समझ आता है, लेकिन उसी क्वेश्चन को रिपीटेडली पढ़ते हैं दूसरी बार तीसरी बार, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि एक्चुअली वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं। सो डिस्पाइट ऑफ फिक्सिंग दिस टाइम स्पेन 1 घंटा 1.5 घंटा और 30 मिनट, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पैरेलली तीनों सेक्शंस को विजिट करेंगे, यानी हम सबसे पहले पार्ट सी से स्टार्ट करेंगे, और पार्ट सी में और क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे मे बी ग्रुप थ्योरी से, रिंग से, जो क्वेश्चंस आप देखते ही सॉल्व कर पाएंगे, देखते ही टिक कर पाएंगे।
तो आप पहले पार्ट सी से शुरू कीजिए। पार्ट सी में जो श्योर क्वेश्चन है, हो सकता है कम से कम आउट ऑफ 60 4 से 5 क्वेश्चन तो ऐसे जरूर होंगे जो आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पे कोई रफ वर्क या पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन से जो क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आप पार्ट सी से कर लीजिए। तो इस अटेम्प्ट में होगा क्या, आप पार्ट सी के सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, 60 क्वेश्चंस। दो यू आर सॉल्विंग 4 to 5 क्वेश्चन, बट यू विल रीड आउट ऑल द 60 क्वेश्चंस। जो नहीं बन रहा है उसको समझली रिजेक्ट कर दीजिए कि इसको बाद में सॉल्व कर। देन कम टू पार्ट बी। पार्ट बी के सारे 40 क्वेश्चंस या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए, और उसमें जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आप देख के सॉल्व कर पाते हैं, ऐसे 4 5 6 या जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें। और यही काम 15 मिनट 10 मिनट पार्ट 1 को भी दीजिए कि पार्ट 1 में जितने क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे अगर आपने पार्ट ए की थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन की है तो, या आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट मैथमेटिक्स एंड जियोमेट्री, वो जो कॉमन थिंग्स हैं उनमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, तो आप 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो देख के ही आप टिक कर पाएंगे। तो ये हुआ फर्स्ट विजिट। हम अपने प्लानिंग को विजिट्स में भी प्लान कर सकते हैं। सेकेंड विजिट में हम फिर पार्ट सी में आएंगे। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे जिन क्वेश्चंस को हमने छोड़ दिया था, जिसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। अगेन इन आवर सेकेंड अटेम्प्ट हम फिर कोई 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बना लेंगे, these are the correct answers. Then we give next time to part B. अब हम पार्ट बी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे and try to solve more questions in this attempt for part B. जब सेकेंड विजिट करेंगे तो पार्ट बी के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लें, पार्ट सी के लिए कम टाइम रखें, क्योंकि पार्ट सी में फिर आप जब सेकेंड विजिट करेंगे तो इसके बाद इसमें और एक विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि देयर विल बी क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सॉल्व करके आसानी से बना लेंगे। सो दिस कुड बी द सेकेंड स्ट्रेटजी। अगर आपके पास टाइम स्पेन बचता है, सिंस यू विल बी हैविंग 3 आवर्स, तो आप 1-1 घंटे की 3 विजिट या 40 मिनट, फिर 1 घंटा और फिर 1 घंटा 20 मिनट ऐसे करके भी प्लान बना सकते हैं कि हम फर्स्ट 40 मिनट विजिट 1 रखेंगे, नेक्स्ट 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स हम विजिट 2 रखेंगे, और लास्ट 1 घंटा 20 मिनट जो होगा यानी कि 80 मिनट्स जो होंगे वो हम विजिट 3 रखेंगे। ठीक है, तो देयर आर 2 क्लियर कट स्ट्रेटजीज ऑफ गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। या तो आप टाइम कंस्ट्रेंट फिक्स करके कीजिए कि हम 1 घंटे 1.5 घंटे और 30 मिनट देंगे, ये हमारी प्लानिंग रहेगी, या हम नंबर ऑफ विजिट्स के थ्रू जाएंगे। सो यू मस्ट हैव द डेफिनेट आंसर टू दिस क्वेश्चन कि जब मैं एग्जाम हॉल में अपीयर होऊंगा तो मैं इन दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करूंगा। डू नॉट फॉलो एनी रैंडम स्ट्रेटजी, इट किल्स योर टाइम एक्चुअली, एंड टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट things about preparation and strategy of solving the questions. Rest is syllabus. अगर हम पार्ट बी और पार्ट सी की बात करें तो the questions from part B and part C will be based on the syllabus of mathematical sciences, which are divided in 4 units. सारे स्टूडेंट्स के यानी डिफरेंट स्टूडेंट्स के अपने अपने अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। कोई प्योर मैथमेटिक्स के पार्ट में कंफर्टेबल हो सकता है, कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट में हो सकता है, और कोई स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में कंफर्टेबल हो सकता है। तो अगर हम पूरे नेट के सिलेबस को 3 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई करना चाहें तो वो क्लासेस हैं प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स, दैट इज एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, अप्लाइड मैथमेटिक्स के टॉपिक्स, दैट इज यूनिट 2 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा, this unit 1 and unit 2 are for pure mathematics. Unit 3 is for applied mathematics, ODE and PD and classical mechanics, and unit 4 for statistics and operations research के LPP के कुछ problems इसमें हो सकते हैं, but mostly this part is dedicated for the statistics. Markov chain वगैरह हैं जहाँ से ज़्यादा questions आते हैं. So if you are comfortable with this statistics part, this also covers a good amount of marks and questions in NET. So this part is also equally important, I would say. तो ये पूरा सिलेबस जो है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्योर मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स हैं, एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा एंड टोपोलॉजी, ये टॉपिक्स हैं। यूनिट 3 अप्लाइड मैथमेटिक्स के सेक्शन में न्यूमेरिकल भी एक होना चाहिए था, ओडी पीडी न्यूमेरिकल इज मिसिंग, आई थिंक देयर मस्ट बी
numerical analysis part also, and unit 4 is for statistics. So you first pick, if you are not going to solve all the topics of pure mathematics, अगर आप comfortable नहीं है, तो आप नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपको ये बताएगा कि कौन से टॉपिक आपको ज्यादा प्रिपेयर करना है. यू मस्ट हैव अ पर्टिकुलर पिक्चर ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स. हर एक यूनिट से लास्ट 5 साल में या लास्ट 10 साल में कितने कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. जैसे एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा, ये यूनिट 1 है, यहाँ से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. यूनिट 2, तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में देयर आर 6 टॉपिक्स. नाउ यू हैव टू चूज कि 5 to 6 टॉपिक्स में से आप कौन से 3 या 4 टॉपिक जरूर प्रिपेयर करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. यूनिट 3 डिफरेंशियल इक्वेशन, नो डाउट you are going to prepare for this. Make sure that you are preparing at least linear algebra, complex analysis, differential equation, and classical mechanics. And you have, if you have time, linear programming problems and the problems of probability and statistics. Random variable के questions हो सकते हैं, Markov chain के questions हो सकते हैं, और आप पैटर्न देख लीजिए कि statistics में से actually कौन कौन से questions आ रहे हैं. So there are resources available which tells you कि किस किस section से कितने कितने questions vary करते हैं. Like if you see from unit 1 clear analysis and linear algebra से ये range है कि 45 to 70 marks के questions इसमें से आते हैं. So 15 से 20 question. So this is the largest portion if you see. So my message to all the students of Chhattisgarh, the students of different colleges of Chhattisgarh, please do not take this linear algebra portion easily, or do not ignore this portion. This is the most important portion for this exam, for upcoming exams, for your interviews in IITs for PhD, and for every occasion like civil services exam and everything. And the basis for this linear algebra topic is matrices. So study well, pay more attention to the theory of matrices and topics of linear algebra. तो इस स्लाइड में आप देख पाएंगे किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस एक्चुअली में आ रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं. नाउ दिस स्लाइड टेल्स यू the different topics of important topics of complex analysis. Like अगर आप complex analysis prepare कर रहे हैं, so you make sure कि analyticity of a function हम बहुत अच्छे से समझ सके. Cauchy-Riemann equations, singularities, isolated और नॉन आइसोलेटेड टाइप के सिंगुलरिटीज, फिर उनका फर्दर क्लासिफिकेशन, पोल्स, रिमूवेबल सिंगुलरिटीज हैं. इन टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं. लाइक रेसिड्यू थ्योरम, इसी कॉची रेसिड्यू थ्योरम, तो ये कंप्यूट करने वाला पोर्शन है, इसलिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से इन टॉपिक से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं. This slide tells you, since we are running behind the time, I will try to wind up my discussion as soon as I can do. So as I was saying, there are number of opportunities other than getting PhD or being registered for PhD in IITs, those which requires qualification of this NET exam. Like it makes you enable for lecturership in universities and colleges, to be registered for PhD in institutions of national importance like IITs and NITs and ISERs and other national central universities. There is direct recruitment in DRDO through NET. They also provide research facilities. There are different laboratories like CSIR laboratories in India. If you search CSIR laboratories, one of them is there in Dhanbad itself. And there could be other labs where you can directly get entered through this exam. There are other opportunities to go in the organizations like PAR, and those who have set their minimum eligibility criteria to have NET qualified in the prescribed subject. So there is diverse opportunity to use this qualification of holding a NET with JRF. This slide talks about the statistics of last few years and how it happens. कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं, कितने स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्लियर करते हैं. दिस इज अबाउट
ऑल द सब्जेक्ट्स। आप पर्टिकुलर मैथमेटिक्स का भी स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, उसमें से कितने को JRF मिला और कितने को LS मिला, या टोटल कितने लोगों ने नेट क्वालिफाई किया। सो देन यू विल हैव अ करेक्ट पिक्चर कि हमें कितने स्टूडेंट में से कितने में से आना है। सो यू विल सी that you have to be sure that type you have to be in top 5% to get JRF. So the number of students varies every year. किसी साल 50,000 बच्चे अपीयर हो सकते हैं, किसी साल और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो it actually it will be the deciding factor that you have to secure your marks, your position in at least top 5%, top 6 to 7% of appearing students to make sure that you are holding NET with JRF. This is about strategy and plans of preparation of NET exam. But I would say कि आप एक बार नेट के लिए जो टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेंगे, ये एज आई वाज सेइंग अर्लियर, ये आपको हमेशा काम आने वाला है। Once you have the net, you will be applying for PhD in some IITs. तो जिस भी IIT के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा, since I used to be there in some faculty recruitment interviews, in PhD interviews and other interviews where the students and teachers appear for recruitment for PhD position. So what is more important, जब कभी भी आप नेट एग्जाम होने के बाद PhD के लिए अपीयर होंगे, you must have a clear interest for your future career कि आप applied mathematics की तरफ जाना चाह रहे हैं या pure mathematics की। ये this is the lacking part if I say in the context of colleges in Chhattisgarh, as in my time, जब PhD के लिए अपीयर होंगे तो हमसे वहाँ पे इंटरेस्ट भी पूछा जाएगा। All the questions of the interview will be based on our interest, कि आप किस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं। This will be the question before you in the interview. और वहाँ पे हम क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं, तो हम उसका क्लियर कट आंसर नहीं दे पाते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैथ्स के किसी भी टॉपिक से हमसे रैंडम क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्योंकि हमको एनालिसिस अच्छे से आता है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से आता है, तो हम कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि शायद हम बता पाएंगे। बट द सिनेरियो चेंज्ड इन द रूम ऑफ इंटरव्यू एक्चुअली, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन किस किस टॉपिक के टीचर्स अवेलेबल हैं, किनके पास पोजीशंस अवेलेबल है, आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वहाँ से जो क्वेश्चंस डिफरेंट किए कि नहीं। So first you make your choice clear कि आप प्योर मैथमेटिक्स के टॉपिक्स प्रिपेयर करेंगे या फिर अप्लाइड मैथ। So the message is the preparation you will, the time you will actually pay for this preparation of NET will be equally beneficial for your firms like your PhD interview, your recruitment interview। अभी भी IITs और NITs में भी जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी टीचर इन्हीं टॉपिक से लाइक आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, जो कॉमन बेसिक टॉपिक्स हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, या और भी मैट्रिक्स का डायगोनलाइजेशंस, बहुत बेसिक चीजें हैं, वो टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक्स शुरू से ही प्रिपेयर कर रखा है बाय द टाइम ऑफ देयर नेट क्वालिफाइंग एग्जाम, at the time of their PhD entrance, at the time of their faculty recruitment. So do not take these topics loosely, as we do common mistakes कि ये टॉपिक्स फ्यूचर में शायद इतने काम के नहीं होंगे, ये गलत बात है, बल्कि these topics are equally relevant in every occasion of your future endeavors and future occasions of being evaluated in the reference of mathematics. Last thing I would say, if you are not qualifying NET this time, or जब भी आप अपीयर हो रहे हैं, हो सकता है आप उस टॉप 6% या 5% में नहीं आ पाए, हो सकता है इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार नेट के लिए अपीयर होंगे आगे आने वाले टाइम में। Do not give up your hope and do not multiply your preparation with zero, कि हमने एक बार नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो हम आगे कभी नहीं कर पाएंगे, ये ख्याल कभी नहीं लाना है, बल्कि you be consistent in preparation of NET. Every day, every single day, you devote certain amount of time to prepare for the upcoming NET.
अगर हम अभी बात करें तो हम हमेशा हमको फोकस्ड रहना चाहिए कि हम दिसंबर का नेट कैसे क्लियर करेंगे। फिर दिसंबर के ठीक बाद हम फोकस्ड रहेंगे कि हमको जून का नेट कैसे अपियर करना है। एंड दिस टेक्स टाइम, कम से कम 1 घंटे का प्रिपरेशन टाइम चाहिए ताकि आप टॉपिक्स को उसके डेप्थ तक समझ सकें। टॉपिक्स को स्टडी करना एक बात है, उन पे एमसीक्यूज और एमएसक्यू करना दूसरी बात है। सो इट नीड्स मोर स्ट्रेटजिकल टाइम मैनेजमेंट, मोर स्ट्रेटजिकल प्रैक्टिसेस। जैसा कि मैंने कहा कि 1500 से 1600 क्वेश्चन आप नेट एग्जाम के कुछ दिन पहले आप लगा के अगर गए हैं तब आपके पास एक मिनिमम कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो एवरी सिंगल टाइम आपको नेट अपीयर होते रहना है जब तक आप नेट क्लियर नहीं कर लेते हैं। MSc फर्स्ट ईयर विल बी द राइट टाइम आई वुड से टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर नेट, क्योंकि आपके पास एक सफिशिएंट बैकग्राउंड है पूरे ग्रेजुएशन के क्लासेस का। 3 साल आपने मैथमेटिक्स सफिशिएंटली पढ़ रखा है, तो आपके पास MSc फर्स्ट ईयर से करेक्ट अपॉर्चुनिटी है नेट प्रिपेयर करने के लिए। सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ योर MSc, and it takes 1 year of preparation. Then you can appear for NET exam in every upcoming time until you crack it. So don't give up the hope, don't be upset with the failures, and be consistent in the preparation of NET. One day you will definitely be successful. Thank you and wish you all good luck. Yes, Nidhi. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने स्ट्रेटेजिक प्लान और CSIR नेट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसके बारे में डिस्कस किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। नाउ फॉर द first lecture of this workshop, I would like to invite Dr. Sonali Mandal. Madam, you are here? Yes, ma'am, I'm here. Okay, then our first speaker is Dr. Sonali Mandal, Assistant Professor, SRM University, Andhra Pradesh. She is basically from Dhanbad, Jharkhand. She has completed her post-graduation and a PhD from Department of Mathematics and Computing, IIT ISM Dhanbad. Her field of research is elastodynamic. She has qualified GATE exam in 2016 and CSIR UGC NET in 2018. She has experience as a teaching assistant in Department of Mathematics and Computing, IIT ISM Dhanbad. Also, she was a research fellow in IIT ISM Dhanbad. She worked as assistant professor, Mathematics, Central University of Jharkhand, Ranchi. At present, she is assistant professor in Department of Mathematics, SRM University, Amravati, Andhra Pradesh. Madam Mandal awarded merit cum mean scholarship at IIT ISM Dhanbad and IIT ISM JRF and SRF. She also got Best Poster Presentation Award in International Conference organized by IIT Mandi. She is life member of many mathematical societies and also reviewer of many peer-reviewed journals. She has more than 12 publications in international peer-reviewed journals and also attended many national, international workshops and conferences. So with this brief introduction, I would like to invite Dr. Sonali Mandal ma'am to grace the students with her precious knowledge. So Mandal ma'am. Thank you so much, Dr. Nidhi Devangan ma'am, for the kind introduction. And first of all, good morning, everyone. And thank you, Dr. Nidhi Devangan ma'am, and all the members of the organizing committee to giving me an opportunity to deliver a lecture in this webinar or in this workshop. Okay, so first of all, I will share my slides and then I will talk.
Ma'am, is it visible? Yes, ma'am. Okay. So once again, thank you for giving me a chance to talk on the topic of mathematical sciences for CSIR-NET or JRF exam. In the previous lecture, Dr. Sanjeev Anand Sahu sir has already explained very nicely about the details of the examination and also the career opportunities that you get after you qualify the CSIR-NET exam. Okay, so in my lecture, I will be sharing some of my experiences because that may be beneficial for many of us because I qualified. I also attempted it. It was not that I did it in first chance. Okay, I took 3-4 attempts and then I qualified. Okay, so maybe my experiences may benefit you all. Okay, हो सकता है किसी को उससे मेरे अनुभव से आपको फायदा मिले. Then I will be sharing some do's and don'ts. Means आपको क्या करना चाहिए एग्जाम के लिए या फिर एग्जाम पे क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम. ओके, एंड क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं कोशिश करूंगी बताने का. After that, I will share some questions. So that means you in 1 hour I cannot teach anything. Okay, but I will share some previous year questions of PD, partial differential equations, so that you get an idea on what strategy you should apply to solve the questions. Okay, so that I will be dealing in this lecture. First of all, sir has already told the exam scheme, but I am briefly explaining it. So basically, this CSIR-NET exam is of 3 hours, and the maximum marks is 200. The whole paper is divided into 3 parts. Part A is for general science, quantitative reasoning, and aptitude. Okay. Then part B is there, which consists of questions from maths, and part C also contains questions from maths. Now, in part A, there are 20 questions in total, and maximum that you have to attempt is 15, right? And if you do if you answer it correctly, then you get 2 marks, and if you answer it wrongly, then there is a negative marking. So 0.5 marks, 0.5 marks will be reduced from your total marks. Okay. In part B, there will be 40 questions in total, and maximum you have to attempt is 25. So for each correct answer, you get 3 marks, and for each wrong answer, you will lose 0.75 marks. Okay, that means 25% of marks will be reduced. Now you see, like you can attempt maximum 25. So suppose what happens if someone is doing more than 25, then that will not be counted. They will check only the first 25. Okay, same applies to all the parts. In part A also, the maximum you can attempt is 15. So if you do more than 15, they will check only the first 15. Okay, even if you have done other questions correctly, maybe your question 16 is correct, that will not be checked. They will check only top 15 from the starting. Okay. Now talking about part C, it consists of 60 questions, out of which maximum you can attempt is 20. तो आपको 20 ही करने हैं. अगर आप 20 से ज्यादा करते हैं तो सेम वही आपके फर्स्ट 20 चेक किए जाएंगे, उसके बाद चेक नहीं किए जाएंगे, भले वो सही हो या गलत हो. Okay. Now in this section there is no negative marking, but this is a multiple correct type questions. Okay, so part C में जितने भी questions होंगे उसपे एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं. So it may be possible that for one question only one option is correct. Okay, that may be a case. In some cases it may happen that one option A and option B both are correct, or option A and option D are correct, like that. That means more than one may be correct. It may happen that 3 are correct. It may happen that all 4 options are correct. So to get marks, you have to answer all the correct answers. Okay, you have to mark all the correct options. Sorry, you have to mark all the correct options. Means आपको सारे ही correct options को mark करना है. Then only you will be getting marks. Otherwise, you will not get marks. And yes, there is no negative marking. So even if you do wrong, there is no negative marking. But still, since the maximum you can attempt is 20, so you should be very, very careful while solving part C, because if you
miss, by chance if you miss any of the options, then you are not getting any marks, right? So this is the basic exam scheme. वे you will, एक तो आपका टाइम जाएगा, अगर आप किसी क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंट नहीं है फिर भी आप कुछ कर रहे हैं, you are giving your time, so in that time you can solve any other question. Okay, so I will suggest that if you are finding difficult to do any question, just skip that, because you have lots of options. So you try to do that during examination. Try to avoid those for which you are not confident, to avoid the negative marking. So these are some do's and don'ts that you should follow during the examination. Now I will quickly deal some questions of partial differential equations so that you get an idea on how to do the questions or what strategy you should apply to solve the questions. So first of all, this is the syllabus of partial differential equation. As I told you, whenever you have to study any topic, you just first note what is the syllabus. So this is the syllabus. In partial differential equations, we have Lagrange and Charpit's method for solving first order PDEs. Then we have Cauchy problem for first order PDEs. Then we have classification of second order PDEs. Then we have general solution of higher order PDEs with constant coefficients. And after that, we have method of separation of variables for Laplace, heat, and wave equation. So first of all, you take the syllabus and you study the questions, study the theory.
First you do the theory part and then you go solving the questions. So you try to solve as much as questions as possible so that you आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं. थ्योरी इज डिफरेंट. थ्योरी किसी को भी पता हो सकता है, बट सिर्फ थ्योरी पढ़ने से वो क्वेश्चंस. Okay, so first learn the theory and then try to solve the questions as much as possible. In this lecture, I have selected some questions which have already come in CSIR-NET examination, some previous year questions. So through these questions, I will try to make you understand that how to approach a question, how to do approach to solve the questions. So first question I have taken, this is from NET December 2015. Okay. So this question was a single correct answer type question. That means it was from part B. The question is, you have to find the solution of initial value problem. A problem is given and boundary condition, initial condition is there. So the value of u is the dependent variable here. If you know the theory of partial differential equations, you must be knowing about what is dependent variable and what is independent variable. So here u is the dependent variable and x and y are the independent variables. So you have to solve, suppose you have to solve this initial value problem. So what you will do, first you try to understand that what type of differential equation is this and what are the methods to solve this type of differential equation. So we can see that this is a first order differential equation. So we will apply the methods of solving first order PDEs. Okay. Now I am rewriting this equation in the form of P and Q. We all know that small p denotes del u del x and small q denotes del u del y. So I'm just rewriting this given question in this form. So it will be rewritten as x minus y multiplied by p plus y minus x minus u multiplied by q equals to u with the initial condition u at point x comma 0 equals to 1. That means the value of u is 1 when x is 0. X is x, means there is no value given to x, but y is 0 here. Okay, we have specified a value for y that is 0. So actually in these type of questions, this theory is used. This is actually a Lagrange's linear equation. When you will see the book for PD and the method to solve the first order PDs, you will find that there is a method called Lagrange's linear equation. Okay, so Lagrange's linear equation is a partial differential equation of this form. The form is capital P multiplied by small p plus capital Q multiplied by small q is equals to capital R, where P, Q are functions of x, y, and z. Okay. Now this is called Lagrange's linear equation. So there is a method to solve this type of equations. What we do, we form a Lagrange's system of ordinary differential equation. So we write as dx upon capital P equals to dy upon capital Q equals to dz upon capital R. So we write, this is called Lagrange's system of ODE. We write this system of equations and then we try to solve this system and we try to find the value of small p and small q in terms of x and y. Okay. So this is the solution of the question. I have written the Lagrange's system of differential equation as dx upon x minus y equals to dy upon y minus x minus u equals to du upon u. Okay, so this is the equation. Now we have to solve this. So to solve this, there is a method. We use the multipliers. Like here, we will use the multipliers 1 comma 1 comma 1, so that this equation will become dx plus dy plus du upon 0. So what we do, we multiply dx upon dx by 1, dy by 1, and du by 1, and then we add it. Okay, and same thing is done with the denominator also. So we are getting this equation dx plus dy plus du by 0. Then solving this, we will get x plus y plus u equals to c1, where c1 is a constant. Similarly, we are free to take as many multipliers as we want. Okay, so just check that whatever multiplier you are using, it is just simplifying the denominator, or it is somehow you are able to calculate the integration maybe. Okay, like if I take the multiplier as -1 comma 1 comma -1,
then we get this type of equation, that is minus dx plus dy minus du divided by 2 multiplied by y minus x minus u. Okay, so you see in the denominator y minus x minus u is there, and in the numerator its derivative is there. Okay, that is dy minus dx minus du. Okay. So now since there is no zero in the denominator, so we will equate it to another that is dy du upon u, another fraction which is already there in the system of equation. Okay. So in this way we will integrate now both sides, and we will be getting one more relation with C2. C2 is another constant. So using the given boundary condition, now we will get an answer u square upon x plus y plus u plus y minus x minus u equals to 0. Now we will check that option B is correct. So this was the strategy. First you need to know that what type of partial differential equation is this. Then you need to know the theory behind that, and then you solve it. Now since it is the differential equation is an applied part, so you have to solve. No doubt you have to use your pen and your rough paper, and you have to find out the answers. That is the only way. You cannot guess that okay, this is the answer. No, you cannot guess. You have to solve it. Next question which I have taken is from, so this is I have taken this question from June 2013, and it is a multiple correct answer type question. That means there is a possibility that more than one options are correct. Okay, and you have to check for each and every option, then only you can say that whether how many options are correct. Okay. So the PD is, it is also a first order PDE, that is P plus Q equals to PQ, and then which of the following are correct. Then you have to check, and then only you can say whether how many options are correct, whether one is correct or more than one is correct. Okay. So we will use the Charpit's method. So we write down the Charpit's auxiliary equation, and now this is the formula you have to remember. So I think there is some network issue. Okay, so we are going to solve this question. Yes. So again, what strategy you should use? So first you should know what is Charpit's equation. So you will write the equation and will try to solve it. So the theory is this, that we have to write the Charpit's auxiliary equation. Okay. And then you have to find the values of P and Q, so that you can put them in the equation dz equals to P dx plus Q dy. And from that you find the value of Z, right? By integration. So in this question, for the solution part, we will write the Charpit's formula first. Okay. Now you see the first, in the first option, the Charpit's equation is written. So you can just check whether you are getting the same equations or not. Means आप जो equations लिख रहे हैं वो भी यही है कि ये नहीं है. So we will find that one term is different. Okay. Here dz upon something else is there, and but in the question dz upon minus pq was there. So it is not matching. That means option A is not correct. We will discard option A. Okay. So now here you see
If you do not check carefully, then you will find कि dx वाला पार्ट सही है, dx upon 1 minus q ये पार्ट सही है, dy का पार्ट भी सही है. ओके, सो अगर आप जल्दी में उसको टिक कर देंगे कि नहीं ये सही है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको हर एक ऑप्शंस को, मतलब पूरे ऑप्शंस को क्लियरली पढ़ना है. यहाँ पर एक पार्ट गलत लिखा गया है, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ओके, नाउ यू सी in one of the fractions we are getting dq upon 0. So we can solve that. We will write dq equals to 0 and we will get q equals to some b, where b is a constant. That is our option B. In option B, a solution of the Charpit's equation is q equals to b, where b is a constant. So in that case, our option B is correct here. So you got one correct option, that is option B. Now you don't stop here because it is multiple correct answer type. So you have to check all other options. Now you go to third option. There you will find the corresponding value of P is P equals to B upon B minus 1. So if you know the value of Q, you can already check the value of P from the question itself. The question is P plus So next, we will find the value of P using the value of Q. So we will get P equals to B upon B minus 1, where B is the same constant that was there in option B. So in this way, option C is correct. So you got one more correct option. Okay, that is option C. Now option D, you have to check for option D. Option D also may be correct. It may not be correct, but you have to check. So for option D, we will use this formula, that is dz equals to p dx plus q dy. We already know this relation, so we will use this. Now we already have the value of p and q in terms of some constant b. So we will just integrate it and we will be getting our answer. That is option D is also correct. So you see in this question, three options are correct, B, C and D. In order to get marks, you have to mark all these three options. Even if you miss anything, suppose you didn't check option D, you marked only B and C, then you will not get any marks. Okay, so मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस को मार्क करना पड़ेगा जो भी करेक्ट है. जैसे यहाँ पर B, C, D करेक्ट था, तो आपको B, C, D तीनों को मार्क करना पड़ेगा. Then only you will get marks. Next question I have taken, that is a single correct answer type question. And this question was there in NET June 2016. Now ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आया है. अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखें तो मुझे लगता है आप 10 में से 8 टाइम ये आ चुका है. Out of 10 exams, in 8 exams you will find this type of questions. Okay, और कभी-कभी ये 3 मार्क्स में आता है और कई बार तो ये 4.75 मार्क्स में ही दे देते हैं. दैट मीन्स कभी पार्ट बी में आता है, कभी पार्ट सी में भी आता है, कुछ फिक्स नहीं है. बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इस टाइप के क्वेश्चंस. ओके, सो क्वेश्चंस क्या है, दैट अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज द नेचर ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. दैट इज whether it is hyperbolic, whether it is parabolic, whether it is elliptic. Okay, like that. Classification of second order partial differential equation. So this is the theory. That is very simple. If you must already be knowing that whenever there is a differential equation of this form, that is r del 2u del plus s del 2u del x del y plus t del 2u del y square plus d equals to 0, जहां पर r, s, t all three are functions of x and y, and here capital T is a function of x, y, u, then del u del x and del u del y. तो तब क्या होता है, we will check s square minus 4rt. Okay, so if s square minus 4rt is less than 0, then we say that this differential equation is elliptic in nature. Okay, if s square minus 4rt is equal to 0, then we say that this equation is parabolic, and if s square minus 4rt is greater than 0, then equation is hyperbolic.
So the theory is very simple, but this is very important, very important. Now you see, the given question is not in the standard form that we are talking about. See, this is not in the standard form, so we have to make it in the standard form. So we will multiply it actually here, so that we get the standard form. See, in the question, two brackets are there. In first bracket, a xy del x plus b xy del y. Okay. Here x comma y in bracket means that small a is a function of x and y, nothing else. Okay, so you can skip that while solving. Again, in the second bracket, there is c del x plus d del y. Then u is there equals to 0. So we will first multiply it and bring it to the standard form. So standard form हमारा क्या बनेगा? Here यहाँ पे हमें मिलेगा ac del 2u del x square plus ad plus bc del 2u del x del y plus bd del 2u del y square equals to 0. Now हम इसे कंपेयर करेंगे. ओके, जिस स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे एस स्क्वायर माइनस 4rt. यहाँ पर r जो है ac है, s जो है वो है ad प्लस bc एंड कैपिटल T is bd. So we'll just find s square minus 4rt. So actually when you solve it, you will be getting one number, that is ad minus bc whole square. Okay, not number, means a function ad minus bc whole square. Now you see, if you square something, some real number or anything, then you cannot get negative. There is no possibility of negative. So we can say that this s square minus 4rt is always greater than equal to 0, right? या तो ये 0 होगा या तो greater than 0 होगा, बट क्या ये exactly 0 होगा ये हम नहीं कह सकते, या फिर ये हमेशा greater than 0 होगा ये भी हम नहीं कह सकते. Now we'll go to our options. First option is always hyperbolic. So hyperbolic का condition है greater than 0, but हमें मिला है greater equal to 0. So first option is not correct because it is not always hyperbolic. Okay, here always word is there. Next option says always parabolic. Now again हमें मिला है greater than equal to 0, so we cannot claim that it is always equal to 0. Parabolic तब होता है जब equal to 0 होता है. So that's why this option B is also wrong. It is not correct. Okay. Then option C says never parabolic, means कभी भी parabolic नहीं होगा. Parabolic कब होता है? जब equal to 0 होता है. ये कह रहा है कि कभी parabolic नहीं होगा. Again that is not correct because there is a possibility to be 0. What we got is greater equal to 0. So there is a possibility for it to be equal to 0. That means parabolic होने की possibility है. So option C is also wrong. That it is never parabolic, it is wrong to say that. Now we are only left with option D. That is never elliptic. And that is actually true. Elliptic means less than 0. And as you can see, it is always greater equal to 0. So there is it is sure that it is not less than 0. That is for sure. That's why our answer is option D, that is never elliptic. Okay. So this question, option D is correct. So in that way, you have to check each and every option. In partial differential equations, you sometimes you get this type of questions in which a PD is given. Which of the following are complete integrals of the partial differential equation pqx plus yq square equals to 1. So एक PD दी हुई है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा उसका complete integral है और इसका solution है. Okay. So अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बट वो बहुत टाइम लेगा. तो कई बार हमें क्या करना पड़ता है, हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं. ओके, जैसे यहाँ पर z इक्वल्स टू x अपॉन a प्लस ay अपॉन x प्लस b ये दिया हुआ है एज फर्स्ट ऑप्शन. सो नाउ यू रिकॉल व्हाट वाज p. p वाज partial derivative of z with respect to x and q was partial derivative of z with respect to y. So you can easily find p and q using the value of z, because z is given in terms of x and y. So you can easily calculate del z del x and del z del y, so that you will have the expressions of p and q. So what you do, you take first option first, you
you have to check all the options because it is a multiple correct answer type questions. So there may be one or more options correct. So first we will start with A. So for A, we will find P, we will find Q. Then we will substitute in the left hand side because right hand side is 1. So you check whether left hand side is 1 or not. So when you do that, you will find that option A satisfies the equation. So you will get left hand side 1 and right hand side is already 1. So that means option A satisfies the given equation. Then you can say that yes, option A is correct, that it is a complete integral of the PD. Now you don't stop here because this is a multiple correct answer type questions. So you have to check for all the options. Now when you will check for B, you will find that B does not satisfy the equation. You will find something else in the left hand side. Okay, so that means that option B is not in the answer. Then again similarly you check for option C. You will find that option C is also not there. After that option D is there. And when you do the same process for option D, that means you find the value of small p and small q, then you will see that option D satisfies the equation. Hence, in this question, 2 options are correct. That is option A and option D. So this is one way to proceed to a question of PDE, not by direct method, but by substituting the given solutions to the differential equation. Okay. This is also a method. If you are not getting how to solve it, or if it will take much time to solve it, so try the options. You put the options in the question and you will get the result. Okay, if it satisfies, then that is the answer. If it is not satisfied, then that is not in the answer. So for this question, option A and D are correct. Next question I have taken, that is from the topic second order partial differential equations having constant coefficients. Okay, second order. So here a function is given u x comma t, and it is said that it satisfies the PDE u x x minus u t t equals to e to the power x plus 6t. Okay, and some initial conditions are given. Now this question may look a little difficult, but we all are familiar with the complementary function and particular integral. Okay, that is the process to solve the second order PDE. This is the theory. When you have to find the complementary function, what you do? First, you suppose we are considering the equation f of d comma d dash z equals to f of xy. So what we do? We replace capital D by small f and capital D dash by 1. And then we find the auxiliary equation. From there, we find the roots of the auxiliary equation. And after that, we find the complementary function. So if the roots are distinct, the complementary function will be of the form f1 y plus m1x, that is any function of y plus m1x, plus f2 y plus m2x, and so on. Okay. And suppose if the roots are equal, if 2 roots are equal, then the complementary function takes the form of f1 y plus m1x plus x f2 y plus m1x, like that. Okay, x is multiplied, and inside the in parenthesis there is the same term, that is y plus m1x is there, because m1 was m1 and m2 are same. Okay, that's why we are repeating m1, but we are putting a x outside of f2. So that is the general theory. We have to do like that. Okay, and suppose if we are getting all the roots equal, then the formula is f1 y plus mx plus x f2 y plus mx plus x square f3 y plus mx, and so on. Okay, got it? So in this equation also we can do that. So here we will get auxiliary equation as m square minus 1 equals to 0. So that you will get the value of m as plus 1 and minus 1. So we will use this theory, the form of the complementary function, and after that we will find the particular integral. Now you see in the right hand side, 2 type of terms are there. First is e to the power x, and second is 6t. So you have to find the particular integral for both these terms. Okay. Again, we have the theory. You will find it in any book, that when capital F x y is of the form e to the power ax plus by,
Then pi is calculated by, we write as 1 upon f d dash e to the power ax plus by, and then we replace d by a and d dash by b. So we are getting 1 by f of ab e to the power ax plus by. That is the particular integral. Okay. Similarly, other forms are there, and other forms of calculating the particular integral are given. So we will use that, and then we will find the answer. When you do that, when you find the complementary function and particular integral, then you also have to put the boundary conditions, because here you see the initial conditions are given. U x comma 0 equals to sin x, and u partial derivative of u at the point x comma 0 equals to 0, that is given. So you have to use that also. So you find the complementary function, then you find the particular integral, you write the complete solution. After that, you use the initial condition, and then you will arrive at an expression for u x comma t, and then you have to put x equals to pi by 2 and t equals to pi by 2 in order to get the answer. So when you solve this question, you will see that option C is correct. So like that, I am just telling you the approach, that how to solve a question, how to start. Okay, once you start, you can definitely do it. First you need to know that how to start this question. Okay, then I have taken one more question. This question was from NET December 2017. This is also multiple correct answer type question. That means more than one questions are correct. So this question is, consider the second order PDE. A PDE is given, that is 8 del 2 z del x square minus 2 del 2 z del x del y minus 3 del 2 z del x square equals to 0. Then which of the four are correct? Okay, there are four options. Again, since it is a multiple correct answer type questions, मतलब एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं, तो आपको चारों को चेक करना पड़ेगा. चार ऑप्शन है, आपको चारों को चेक करना पड़ेगा. So first two options are for the type of PD, whether it is elliptic or hyperbolic. So we will use that classification theory. Okay. So using that theory, we can say whether it is elliptic or hyperbolic or whatever. After that, general solution is there. Okay. Since this is also a second order PDE, but it is homogeneous. That means right hand side there is 0. So you don't need to find the particular integral. You only need to find the complementary function. Okay. So we will do that. So actually I have solved it. This is the solution. First we write the differential equation. We identify what is the S, R and T. Then we find the value of S square minus 4RT, and we find that this value is 100. So 100 is obviously greater than 0. So, so that this equation is hyperbola, because we learned that S square minus 4RT is greater than 0, then the equation is hyperbola. So that's why this given equation is hyperbola. So option A is not correct, which is not elliptic, but option B is correct, the equation is hyperbolic. Okay, so we'll mark option B first, then we'll go to check option C and D. So for that, we will find the auxiliary equation. Auxiliary equation, how will you find? You will put D as M and D dash as 1. That means del Z del X is equals to M and del Z del Y equals to 1. So in that way, you will be getting 8M square minus 2M minus 3 equals to 0. Then we will factorize it. We will find two values of M. That means two roots of the auxiliary equation, and they are distinct. First root is 3 by 4, second is minus 1 by 2. Okay. Now using the theory of writing the complementary function, we will write the general solution. Okay. So general solution is Z equals to f of y minus x by 2 plus g of y plus 3 by 4x. Okay. So in that way, we will check whether it matches with option B or option C. Option C or D, and we will find that it matches with option C. So this question has two correct options, option B and option C. So this way you have to mark all the correct options. Next, one more question I have taken. This is also a multiple correct answer type question. That means more than one may be correct. And a wave equation is given here.
del 2u del x square, del 2u del t square equals to del 2u del x square. Okay, and a condition is given, initial condition u x comma 0 equals to e to the power I omega x or some omega belonging to r. Then you have to solve it and you have to tell what is the answer. Now, if you try to solve it using the variable separable method and all, then it will take lots of time. Okay, so since we have limited time in NET examination, the process doesn't matter. The thing is that you have to mark the correct option. So what we can do, since we are already given the equation and the boundary condition, that is value of u at x comma 0 is given, so you first try to see that which of these following options satisfies this. Okay, first check for the initial condition, that u x comma 0 equals to e to the power I omega x. You know what you will find? You will find that option D will never satisfy it, because in option D, exponential term is not there. So first discard that one. Option D is not, cannot be the answer, because it does not satisfy the given condition. Okay, so first of all you discard this one. Now you are left with three options, A, B and C. So now since it is the exponential type and you have to do partial derivatives twice, so I think that is much easier. You can do that. So you try to put the given options in the given wave equation. That is, u is given. So in first option, actually it is e to the power I omega x plus t, right? So you find the del 2u del t square, then you find del 2u del x square, then you put that in given equation, and also you check whether the option A satisfies the boundary condition or not. So you will find that it satisfies both the equation as well as the condition. So that you can say that yes, option A is correct. It is the solution of the wave equation. Okay. Now same process you can check for B and C. मीन्स जैसे आपने A को चेक किया, आप क्या करेंगे, पहले बाउंड्री कंडीशन देखेंगे कि वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं. अगर वो करता है, देन हम चेक करेंगे कि वो गिवन वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं. और अगर आपका यू एक्स टी दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, देन आप कह सकते हैं कि दैट इज द करेक्ट आंसर. सो इन दिस क्वेश्चन यू विल बी गेटिंग 3 आंसर्स, A, B and C. Okay, D we already discarded in the beginning. So you see, अगर आप इसको proper method में solve करेंगे using the variable separable, it will take lots of time. So better to do it in the reverse order. You check from the options. This was this question. Then I have some list of important books of differential equations. Okay, which I suggest you, because I have also prepared from these books. These are very helpful. First is Ordinary and Partial Differential Equations from M.D. Rai Singhania. The writer is M.D. Rai Singhania. Then second book is Differential Equations by S.L. Ross. Okay. And the third one is Introduction to Partial Differential Equations by K. Sankara Rao. So these are 3 important books. There are lots of other books also, but I prepared from these books. And then I want to thank you all for your time, and good luck to those who are preparing and or who will appear in near future. Good luck to everyone. Now, if you have any questions you want to ask, then you can ask me without any hesitation. Anyone, if you want to ask any question, then ma'am are here with us Yes. for a few more times. Anyone? अगर आपको पीडी के अलावा भी CSIR नेट एग्जाम से रिलेटेड कोई अगर कंफ्यूजन या डाउट्स हैं, तो भी आप मैम से पूछ सकते हैं. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon.
मैम क्या आप नेट के लिए जो सिलेबस है नेट की उनके क्या बता सकते हैं? सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स के लिए जो जो बुक्स हैं जैसे रियल बुक्स यस, कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी थी। जैसे जी इस टाइम पे तो मुझे अभी लिस्ट नहीं है मेरे पास, बट जैसे आप किस टॉपिक के लिए बोल रहे हो? रियल के लिए रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रास, मतलब सारे हाँ सब्जेक्ट हाँ, पर्टिकुलर बुक आप अगर बता पाए तो। रियल एनालिसिस के लिए मुझे एक याद आ रहा है, फ्रेडबर्ग की एक बुक है, सॉरी नॉट रियल, लीनियर अलजेब्रा की। ओके, मैंने वो पढ़ा था, वो बुक काफी अच्छी है। फ्रेडबर्ग, आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, आई विल टेल यू इट। Full name, what is the full name of that book? Stephen Fredberg. And I think Manoj sir is there. He will teach the real analysis. He will tell the good books from real analysis. Okay. Because I have not listed. I listed the that one. Yeah, I got the name. I will write it in the chat box. Okay. Yes. For the linear algebra. ओके मैम, थैंक यू। तो सोनाली, गुड आफ्टरनून मैम। मैम क्वेश्चन करना है। जी बोलो। मैम पीडीए से रिलेटेड आप जो एग्जांपल दिए हैं उसके अलावा और कुछ टॉपिक्स हैं क्या जिससे हम लोग का CSIR नेट में यूज हो सके टॉपिक? आप सिलेबस देखो, पहले सिलेबस देखो और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और एक और चीज है, मतलब ये जो पेपर है, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन आप किसी एक सब्जेक्ट के भरोसे एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। ओके, आपको रियल भी पढ़ना पड़ेगा, लीनियर भी पढ़ना पड़ेगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे अप्लाइड पोर्शन ज्यादा पसंद था, तो मैं रियल को इग्नोर करती थी कि ठीक है अप्लाइड पोर्शन से ही निकल जाएगा नेट, ऐसे करके। फिर एक बार क्या हुआ, इन आई थिंक जून 2017 और दिसंबर 2017, उस बार रियल पार्ट वाज इजी एंड अप्लाइड पार्ट वाज वेरी टफ, सो आई कुड नॉट डू इट। देन आई रियलाइज दैट नो, यू कैन नॉट स्किप एनी पार्ट, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, या तो रियल इजी आएगा या तो अप्लाइड इजी आएगा, ऐसा होता है जो मैंने रियलाइज किया है। तो आपको तैयारी दोनों तरफ से रखनी पड़ेगी, आपको रियल पोर्शन भी रेडी रखना पड़ेगा, अप्लाइड पोर्शन भी रेडी रखना पड़ेगा, किसी एक के भरोसे तो आप नहीं कर सकते। ओके, सो जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग लीनियर अलजेब्रा है। ओके, एंड दैट टेक्स मच लेस टाइम, बिकॉज पीडी और ओडी को सॉल्व करने में आपको टाइम जाएगा, बट ये रियल एंड लीनियर, उसमें कम टाइम लगता है। तो जनरली इन दोनों टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, रियल एनालिसिस एंड लीनियर अलजेब्रा, ये दोनों करना है। और अप्लाइड की अगर बात करें तो अप्लाइड में फिर डिफरेंशियल इक्वेशन इज द मोस्ट स्कोरिंग। जी मैम। मैम यस, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग एमएससी भी कर रहे हैं, तो एमएससी के साथ साथ अपन टाइम मैनेज कैसे करें और नेट के लिए कैसे हम मोटिवेट रहें, टाइम मैनेज कैसे करें, दोनों मतलब साथ हो सके तैयारी। और एमएससी कंप्लीट होने के बाद हमको कितना टाइम देना चाहिए नेट के लिए, क्योंकि एमएससी कंप्लीट होने के बाद हमको एक डाउट भी आता है, हमको लगता है कि फैमिली का भी प्रेशर है, इतना टाइम हमको पढ़ते हुआ हो गया, हमको सेटल भी होना है, तो कितना टाइम सफिशिएंट है, ये भी है। मैं बताती हूँ, आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस ओनली। ओके, तो लाइक अभी आप एमएससी कर रहे हैं, आपके पास फिर भी 2 साल का, या फिर चलिए 2 साल नहीं तो 1 साल का टाइम तो है ही, ठीक है। थोड़ा टाइम हमें लगता है ये समझने में कि हाँ हमें नेट देना है कि नहीं देना है। उसके बाद फिर आप ना पूरा सिलेबस एक बार में मत करिए, आप पार्ट में कीजिए। जैसे फॉर 1 मंथ यू विल ओनली लर्न लीनियर अलजेब्रा, आप लीनियर पे टारगेट कीजिए, मुझे लीनियर सीखना है इस 1 महीने 2 महीने में। ऐसा नहीं कि मतलब 6 महीने में आप सारा कुछ तैयार कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप 2 महीना रखिए लीनियर के लिए कि मैं लीनियर पूरा अच्छे से पढ़ूंगा, ताकि लीनियर पे फिर बाद में मुझे मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो समझिए 2 महीने आपने लीनियर को दिए, आप अपना कोर्सेज का स्टडी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपने एक टाइम रखा है लीनियर अलजेब्रा के लिए,
सिमिलरली जब लीनियर आपका हो गया, उसके बाद आप फिर कोई और नया टॉपिक चुनिए। सपोज रियल एनालिसिस, तो आपने रियल का चुना, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल के लिए तो आप अपना कॉलेज भी कीजिए, उसके साथ थोड़ा सा टाइम रखिए, हर दिन 1 घंटा 2 घंटा, जिसमें आप नेट से रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे किसी एक सब्जेक्ट की, एक एक करके ही क्लियर कर पाएंगे, एक साथ सारा लेकर बैठेंगे तो नहीं होगा। ओके, एक एक टॉपिक लीजिए। जैसे डिफरेंशियल लिया तो डिफरेंशियल का थ्योरी पढ़िए, सिलेबस रखिए अपने पास, उसका थ्योरी पढ़िए, और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो कीजिए। ओके, आप लगा दीजिए 2 महीने 3 महीने, ठीक है, बट अगर 3 महीने करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सीख पा रहे हैं, दैट विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट एग्जाम। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि एक बार में पूरा सिलेबस नहीं करके थोड़ा थोड़ा करके कीजिए, एक एक टॉपिक। एंड यस मैम। आफ्टर एमएससी थोड़ा फैमिली का प्रेशर तो होगा ऑब्वियसली, बट उस समय आप कंप्लीटली फ्री रहेंगे, उस समय आपकी क्लासेस नहीं रहेंगी। तो मैं बोलूंगी अगर आप सच में नेट क्लियर करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एमएससी के बाद आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप उस टाइम में कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगे जहां पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस। ओके, ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाएगा, यूट्यूब में भी वीडियो मिल जाएगा, इवन इफ यू वांट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस वो भी अवेलेबल है। तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा अगर आपको करना है तो। यस मैम। बट जस्ट दैट आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। जैसे सपोज अगर आपने दिसंबर इस साल का किसी भी साल का दिसंबर का एग्जाम दिया, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, बट आप किसी कारणवश नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो फिर आप सोचेंगे कि ठीक है अब तो दिसंबर वाला हो गया, अभी जून में बहुत टाइम है, कुछ और करते हैं, कुछ और देखते हैं। तो ये सबसे खराब चीज है। अगर आपको सच में आप सीरियस हैं तो दिसंबर वाला भले खराब हुआ, आप डीमोटिवेट मत होइए। आपके पास 6 मंथ है, आप उस 6 मंथ को यूटिलाइज कीजिए। ओके, ताकि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्वालिफाई कर सके एटलीस्ट। यू विल गेट चांस एवरी 6 मंथ्स, तो ट्राई टू डू मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम योर टाइम। यस मैम, थैंक यू मैम। Anyone more have questions? मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए मार्केट में बुक अवेलेबल रहता है कि ऑनलाइन स्टडी करना पड़ेगा, किस जैसे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो एक साथ मिल जाए हमें? एक बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, बंसीधर साहू, वेट आई विल राइट द नेम, जिसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले थे प्रीवियस ईयर के। इवन वहां पर सेट के भी क्वेश्चंस हैं, गेट के भी क्वेश्चंस हैं। ओके, I will just write the name. Give me 1 minute. MCQ Mathematics by बंसीधर साहू। मैंने मैसेज में लिख दिया है बुक का नाम। इस बुक में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये सारा चीज मिल जाए, बट बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। सोनाली, यस सर। how important, I mean, since students are asking for the sources of books, तो कुछ दिल्ली वगैरह में कुछ एकेडमीज है ना, डीप्स एकेडमी, पाई वगैरह, उनके कुछ ऑनलाइन सीरीज और ऑफलाइन सीरीज दोनों होते हैं शायद ना ज्वाइन करने के लिए। हाँ सर, अभी ऑनलाइन भी है अवेलेबल। हाँ, तो वो इन लोग को डिप्स एकेडमी के बुक से उनके नोट्स हैं, पूरा सिलेबस के हिसाब से उन लोगों ने लिखा है, और यूट्यूब में भी वीडियो लेक्चर्स हैं। अब दूसरे लोग को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे नहीं, कम से कम 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन लोग मोस्टली यूट्यूब वीडियो लेक्चर के सीरीज को पढ़ करके अटेंड करके नेट क्वालिफाई किए हैं। देयर आर स्टूडेंट्स। तो और डिप्स एकेडमी और क्या पाई वगैरह क्या है, पाईएम है सर। हाँ, और अरिहंत की कोई बुक आती है ना शायद पूरे नेट के लिए, CSIR-NET मैथमेटिकल एनालिसिस। हाँ, अरिहंत की भी आती है सर। हाँ, तो वो ये कुछ रिसोर्सेज हो सकते हैं, और वो इन लोग ऑनलाइन और ऑफ सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्स एकेडमी का ऑनलाइन सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक ऑनलाइन सीरीज में वो लोग मटेरियल भेज देंगे या फिर पीडीएफ सेंड कर देंगे। एक्चुअली बेसिकली क्या है कि वो बुक से ही उठाते हैं कंटेंट, बट उनका कंटेंट बिल्कुल प्रिसाइज होता है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन। यस,
तो बुक्स में वो चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अब ये बताऊं, एमडी राय सिंघानिया की डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी मोटी बुक है, ठीक है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि मैं पढ़ना क्या है। बट वहीं अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं लाइक डिप्स, तो वो लोग प्रिसाइजली आपके लिए दे देंगे कि ये इतना ही पढ़ना है, थोड़ा कम करके मटेरियल दे देंगे कि इतना पढ़ने से आपका मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है मटेरियल्स में और बुक्स में। तो बुक्स तो इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा हेल्पफुल है, बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट मटेरियल्स में बी मोर इम्पोर्टेंट और मोर बेनिफिशियल, क्योंकि वो प्रिसाइजली दे देंगे कि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे ऐसे। वही आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन मोर थिंग टू द स्टूडेंट्स कि एक कोई वो चाहे वो डिप्स एकेडमी की बुक हो या कोई हिंदी की बुक हो, कोई एक रेफरेंस बुक उन लोग रखें जिसके अकॉर्डिंग वो पूरा प्रिपरेशन करेंगे सारे टॉपिक्स का। एंड जस्ट फर्स्ट यू गो थ्रू ऑल द टॉपिक्स ऑफ नेट, आप अपने हिसाब से पढ़िए अपने क्लास के हिसाब से, बट यू जस्ट वेरीफाई योर नॉलेज फ्रॉम वीडियो लेक्चर्स। एनपीटीईएल के क्लासेस हैं या और भी दूसरे वीडियो लेक्चर्स हैं, आप जब एक कोई टॉपिक पढ़ लें तब उसको दूसरे रिसोर्सेज से भी जानने का ट्राई कीजिए कि दूसरे टीचर उसी टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। खास करके एनपीटीईएल लेक्चर्स में आपको जो स्टूडेंट्स खासकर इसको अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द ओरिजिन ऑफ सर्टेन टॉपिक्स जो हम लोग कॉलेज में उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। कि जैसे लीनियर अलजेब्रा ही है, जैसे मैंने बताया कि इसका पूरा बेसिस मैट्रिक्स में लाई करता है, या मेजर थ्योरी है, या तो उनके ओरिजिन्स हम लोग नहीं समझ पाते हैं। खास करके अगर हम एनपीटीईएल लेक्चर्स अटेंड करेंगे डिफरेंट आईआईटीज के जो प्रोफेसर्स हैं, तो हम लोग उस टॉपिक का एक दूसरा व्यू देख पाएंगे एक्चुअली वो आता कहाँ से है। इसलिए सब लोग एक रेफरेंस बुक से प्रिपरेशन तो जरूर करें, और उसके साथ साथ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर से अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को वेरीफाई भी करें कि हमने जो लर्न किया है इस टॉपिक को लेकर के वो सफिशिएंट है कि देयर इज समथिंग मोर अबाउट दिस टॉपिक। सो दिस टू थिंग्स, दिस प्रैक्टिस विल बी गुड। You refer certain reference book and then you definitely make sure कि आप YouTube के वीडियो लेक्चर्स और NPTEL लेक्चर्स जरूर अटेंड कर रहे हैं किसी टॉपिक के लिए। वो add on, it will be add on to your knowledge on the particular topic. This is my suggestion, what I understand. Yes. Thank you, sir. Any more questions, participants? I think there is no more question. So thank you, Sonali ma'am. I am immensely thankful to our speaker, Dr. Sonali Mandal, to take out time from her busiest schedule to grace this event and enlighten us with your valuable suggestion and guidance. So thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now all the participants, there is a lunch break of 1 hour. So we will meet again here at 2 p.m. तो आप लोग के लिए 1 घंटे का लंच ब्रेक, 2 बजे वापस हम लोग यहीं पे मिलेंगे, सेम लिंक पे आप लोग वापस ज्वाइन करिए। 2:15 सेकंड लेक्चर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। Yes, ma'am.